Hello everyone and welcome back to my playlist of Embryology. You are watching Dr. Asif lectures. This is Professor Asif Qureshi और Langman से आज हम करेंगे chapter number 18 which is about the development of the central nervous system which includes brain obviously and the spinal cord. तो ये सारी development हम आज करेंगे and we will also talk about the autonomic nervous system development. So the central nervous system appears at the beginning of the third week, as early as third week, as a slipper-shaped plate of thickened ectoderm और उसको हम क्या नाम देते हैं? Neural plate. Actually, a large placard. See the definition. Oh, well, yeah. I'll cut this off. Don't be confused. Okay. So the neural plate. So we know what is a neural plate. This is the ectodermal thickening. और यहाँ से सारी कहानी start होती है for the formation of the central nervous system. And in the mid-dorsal region in front of the primitive neurocord, its lateral edges soon elevate and they make the neural fold. So ये आपको मालूम है कि we have the primitive notochord. इसके आगे ये सारा area जो develop हो रहा है ectoderm का, all this is called neural plate. और side से ये folding start हो जाते हैं and these folds are then start to make the hollow of the nervous system. With further development, the neural folds continue to elevate and they approach each other in the midline and they finally fuse, forming a neural tube. This fusion begins in the cervical region first and then proceed in the cephalic and the caudal directions. Once the fusion is initiated, the open ends of the neural tube form the cranial and the caudal neuropores. और ये diagram में दिखाया भी होगा. So if you look at the diagram, you see this is the development of the neural groove and the neural crest. तो ये आपस में इस तरह approach करके, so this is now fusion. ये fuse हो गया and then we have a hollow tube. So ये पूरी neural tube बन गई है. और neural tube ऊपर से भी खुली होती है, नीचे से भी खुली होती है, which is what we call the cranial neuropore and the caudal neuropore that communicate with the overlying amniotic cavity. अब ये हमेशा खुला नहीं रहता. Closure of the cranial neuropore proceeds cranially from the initial closure site in the cervical region. So ये close भी होती है and from a site in the forebrain that forms later. इसका मतलब ये है कि it starts closing and then it continues to close. Opening of the this is, if you look at this diagram, it starts in the cervical region. ये इसका क्लोजर है और ये फिर ऊपर भी जिप हो जाता है और नीचे भी जिप हो जाता है. ये अगर खुला रहेगा तो गड़बड़ है. ठीक है. सो दिस इज हाउ द ये देखें, ये पूरी न्यूरल ट्यूब बन गई. अब इसके अंदर पूरा एक होलो ट्यूब होगा. सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड. अंदर इसकी एक पूरा कैनाल होगा एंड दैट इज व्हाट वी कॉल द न्यूरल ट्यूब. ऊपर की इसकी जो ओपनिंग है दैट इज द क्रेनियल न्यूरोपोर एंड दिस इज द कॉडल न्यूरोपोर. ओके, राइट. This later site proceeds cranially to close the rostral most region of the neural tube and caudally to meet the advancing closure of the cervical site. Final closure of the cranial neuropore occurs at the 18 to 20 somatic stage, which is about 25th day of development. और जो caudal neuropore है, it closes approximately 3 to 4 days after the cranial neuropore has closed. So ये इसकी timelines हैं जो important है आपके लिए. Now the cephalic end यानी सर का तरफ of the neural tube shows 3 dilations. One is called the primary brain vesicle. All 3 of them are called primary brain vesicle. और वो 3 जो dilatations हैं उनके नाम हैं prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. अब जो prosencephalon है, it will form the forebrain, mesencephalon will form the midbrain and rhombencephalon will form the hindbrain. So ये 3 partitions बन जाते हैं समझे. और फिर इन 3 partitions से पूरा nervous system actually फिर develop होता है. So you see there is a forebrain, midbrain and hindbrain. तो जो इनके initial primitive structures हैं, that is what we call the prosencephalon, the mesencephalon and the rhombencephalon. Okay, तो ये तीनों forebrain, midbrain, hindbrain बनाएंगे. Simultaneously it forms 2 flexures. One is called the cervical flexure क्योंकि folding हो रही है पूरे embryo की, and the other one is called the cephalic flexure. So again, if you go to figure number 18.4, if you look at this diagram, so there you get these flexures, you see, and फिर ये अब हर पार्टिकल जो है वो अपने साइज में बड़ा होगा. सो दिस फॉर एग्जांपल इज द फोरब्रेन एरिया. इट विल स्टार्ट डेवलपिंग. दिस इज द मिड ब्रेन. इसकी भी साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है एंड देन यू आल्सो सी द rhombencephalic isthmus and the development of the hindbrain. So all development starts by formation first of the neural tube, then closure of the neural tube, and then development of 3 brain vesicles. और ये 3 brain vesicles 3 parts of the brain बनाएंगे. By 5 weeks of development, the primary brain vesicles have differentiated into 5 secondary vesicles. 3 primary vesicles थे जिनके नाम थे prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. और अब वो मजीद कुछ segments बना रहे हैं. 5 secondary vesicles. The prosencephalon forms telencephalon and diencephalon. तो दो ये हो गए. The mesencephalon remains as it is. तो ये हो गया तीसरा.
and then the Methane Cephalon forms the Methane Cephalon and the Myelination Cephalon, to be 4 and 5. So 5 secondary vesicles हैं, and this is all very important. If somebody asks you, okay, tell me the name of the primary brain vesicles, you should know this is Prosencephalon, Mesencephalon, and Rhombencephalon. If somebody asks you, tell me the names of secondary vesicles, so those names are Prosencephalon derivatives, which are Telencephalon and Diencephalon. Midbrain stays as it is. Mesencephalon remains the same, and then the Rhombencephalon derivatives are Methane and Myelination. A deep furrow with the rhombencephalic isthmus separates the mesencephalon from the hindbrain structures, and then there is a pontine flexure which marks the boundary between the metencephalon and the myelincephalon. Both are parts of the hindbrain. Each of the second, और ये diagram में मैंने आपको दिखाया भी था isthmus का area. So this is the area of isthmus which separates the midbrain from the hindbrain. Okay, right. So ये initial developmental phases हैं. देख लीजिए 5 weeks के around ये सब कुछ हो रहा है. The main derivatives of these vesicles are indicated in figure 18.5 भी देख लेते हैं, including the telencephalon, the diencephalon and the mesencephalon, and the methane cephalon and the myelincephalon. इन सब के derivatives important हैं, किससे क्या बन रहा है. So यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, अभी diagram पे भी दिखाता हूँ. So for example, telencephalon cerebral hemispheres इससे develop होंगे. Diencephalon से optic vesicle, thalamus, hypothalamus and pituitary all develop from the diencephalon part. ये मैं secondary vesicles की बात कर रहा हूँ. देखिए 5 secondary vesicles के मैंने आपको नाम याद कराए थे. That was number 1 telencephalon, number 2 diencephalon, number 3 mesencephalon, number 4 methane and number 5 myelincephalon. हर secondary vesicle से कोई ना कोई important structure बन रहा है adults में. Telencephalon forms cerebral hemisphere, diencephalon forms optic vesicle, जिससे फिर आई डेवलप होगी, thalamus and hypothalamus and pituitary. Mesencephalon forms auditory colliculi and metaencephalon cerebellum and pons, and myelincephalon medulla oblongata. Okay, 18.5 diagram को भी देख लेते हैं. So that diagram, if you see diencephalon से क्या क्या बन रहा है, ये structure. Telencephalon से क्या बन रहा है, ये structure. Mesencephalon से क्या बन रहा है, ये. So all these are labeled here in this diagram, also described in the text here. Now the lumen of the spinal cord, the central canal, is continuous with that of the brain vesicles. So the lumen continues up in the brain. The cavity of the rhombencephalon is the 4th ventricle, and that of the diencephalon is the 3rd. So imagine the developmental phases. ये यहाँ से पहले न्यूरल ट्यूब बनी, ये फोल्ड्स बने और ये फोल्ड्स एक दूसरे की तरफ बढ़े और इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पूरा अंदर एक कैविटी बन गई. अब ये एरिया डेवलप कर रहा है इनटू दी प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स एंड सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स. तो इनके अंदर भी कैविटीज हैं, और वो जो कैविटीज हैं दे स्टार्ट फॉर्मिंग सम स्ट्रक्चर. स्पाइनल कॉर्ड में उसको हम स्पाइनल कैनाल कहेंगे, और ऊपर यहाँ पे पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टम है, और वो जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है वो उसके फिर अलग अलग नाम है. ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड लेटरल वेंट्रिकल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, थर्ड वेंट्रिकल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डायनसेफलॉन. तो ये इनकी कैविटीज के नाम है. The lumen of the mesencephalon connects with the 3rd and the 4th ventricle. This lumen becomes very narrow. ये सब हमने पढ़ा हुआ न्यूरोएनाटमी में, so we know what we are talking about. Interventricular foramen of Monroe and aqueduct of Sylvius. So ये सब neuroanatomy structure. The point is, this is how it happens embryologically. Okay, these diagrams are a lot important and the timings are important. 5th week के around ये सारा काम हो रहा है. It's very early in the phases of development. Okay. अच्छा, अब दो components है ना central nervous system की. One is the spinal cord and the other one is the brain development. और फिर मैंने आपसे कहा कि autonomic nervous system भी हम discuss करेंगे. So let's first talk about the spinal cord development और फिर हम बात करते हैं brain development की. अब spinal cord की development समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो neural tube close हुई थी उसके ऊपर जो सारी एपिथेलियम है, यानी ये जो आपको ऊपर से एपिथेलियम नजर आ रही है, दिस इज ऑल नोन एज न्यूरो एपिथेलियम. ठीक है, इसका ये नाम है. सो द न्यूरल ट्यूब जो क्लोज होती है उसके ऊपर जो वॉल है दैट इज नोन एज न्यूरो एपिथेलियल सेल्स. अब ये जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स हैं दे मल्टीप्लाई इन अ वे दैट दे बिकम अ मल्टी लेयर्ड या मल्टीपल लेयर्ड टाइप ऑफ थिक वॉल ऑफ द न्यूरल ट्यूब.
या उसको हम कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. सो अगर आप डायग्राम पे देखें, सो दिस फॉर एग्जांपल इज अ सेक्शन थ्रू द ट्यूब. अब ये जो न्यूरल ट्यूब बनी हुई है उसका अगर एक सेक्शन लेकर उसको हम देख रहे हैं, सो यू सी देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स. ये सेल्स हैं, ये सेल्स हैं, सो इट्स काइंड ऑफ अ सूडो स्ट्रैटिफाइड लेयर. और यहाँ पे इस पूरे को, ऑल दिस थिक स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरो एपिथेलियल सेल्स. नाउ दीज सेल्स आर रैपिडली डिवाइडिंग. इनमें कुछ स्टेम सेल लाइक सेल्स मौजूद हैं विच आर डिवाइडिंग एंड दे मेक अदर टाइप्स ऑफ सेल्स जिनका भी हम जिक्र करेंगे भी. बट दैट्स द होल कॉन्सेप्ट कि the wall of the neural tube is known as the neuroepithelial cell, and this is a thick wall made up of multiple layers, and it appears like a pseudo-stratified epithelium. Junctional complexes at the lumen connect them. During the neural groove stage, the immediately closure after closure of the tube, they divide rapidly, producing more and more neuroepithelial cells. Collectively, they constitute the neuroepithelial layer or the neuroepithelium. तो ये पूरा जो थिक स्ट्रक्चर है, all this is then termed as neuroepithelium. नाम से जाहिर है it's an epithelial layer obviously, and it will develop the nervous system, so neuroepithelium. Once the neural tube closes, neuroepithelial cells begin to give rise to another cell type, and those another cell types are now known as neuroblast. मैंने आपसे कहा कि ये जो neuroepithelial cells हैं, they contain stem cell like features. यानी जब ये डिवाइड होते हैं तो इनसे दूसरे सेल्स बनते हैं. और अब जिन सेल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, दीज आर न्यूरोब्लास्ट. नाउ न्यूरोब्लास्ट जब बनना शुरू होते हैं, दिस इज नाउ कॉल्ड द मेंटल लेयर अराउंड द न्यूरोएपिथेलियल लेयर. यानी अब अगर हम डायग्राम देखें, सो लेट मी टेक यू टू दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल. You see here in this diagram you are seeing organization of different structures. So for example, this is the neuroepithelial layer, और इस neuroepithelial layer से अब different structures बनना शुरू हो जाते हैं. Okay, और अगर हम particularly इस diagram में देखें, you see here this is showing you different cell types. So for example, these are the dividing neuroepithelial cell because you see active mitosis going on here. ये divide होके cells ऊपर move करते हैं, and some of them differentiate into some different character of cellular architecture which is different from the neuroepithelial cell, and they are known as neuroblast. These neuroblast cells, ये जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अमाउंट में, so they start forming a particular appearance which is known as the mental layers. You see here the mental layer, okay, which is on the outer side, but it develops from the neuroepithelial cells. So differentiation of neuroepithelial cells into the neuroblast. और अब इसको हम, इस outer zone को हम नाम देते हैं mental layer. The mental layer later forms a gray matter. So this is the mental layer which develops into the gray matter. और फिर जो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, दैट इज नोन एज द मार्जिनल लेयर, इट बिकम्स द व्हाइट मैटर. सो अगेन इफ यू गो बैक टू दिस डायग्राम एंड ट्राई टू इमेजिन द बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट जो है, यानी ये वाला पार्ट, दिस विल डेवलप इनटू द व्हाइट मैटर. सो दिस पार्ट विल डेवलप इनटू द व्हाइट मैटर. और जो मेंटल लेयर है, इट फॉर्म्स द ग्रे मैटर. इट इलोंगेट्स एंड फॉर्म्स द ग्रे मैटर. अब आपको बहुत सारी इवेंट्स में वो बताऊंगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बट अगेन एम्ब्रियोलॉजी का जो जनरलाइज प्रॉब्लम है कि हो रहा है क्या, ये हमें पता है, हो रहा है कैसे, ये हमें नहीं पता बहुत सारे केसेस में. नाउ तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई, व्हाट इज न्यूरोएपिथेलियल लेयर या न्यूरोएपिथेलियल सेल्स, उनसे फिर मेंटल और मार्जिनल सेल. सो मेंटल सेल से बनेगा ग्रे मैटर, मार्जिनल लेयर से बनेगा व्हाइट मैटर. ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं. नाउ some new terminologies: basal, alar, roof and floor plates. As a result of continuous addition of neuroblast to the mental layer, each side of the neural tube shows a ventral and a dorsal thickening. जो ventral thickening है उसको नाम दिया जाता है basal plate, and it contains ventral motor horn cells which will ultimately form the motor areas of the spinal cord. और जो dorsal thickenings हैं उन्हें alar plates कहते हैं. अब all the ये basal plate भी और alar plate भी, this is formed from the mental layer. तो अगर आप इस डायग्राम पे अब आ जाएं दोबारा, this layer, ये पूरी लेयर, ये सारा कुछ, this is all the mental layer, और ये बाहर वाली जो लेयर थी, this was the marginal layer. अब जो mental layer है उसकी जो dorsal part है, that has a different name, and the ventral part is a different name. The dorsal part is known as the dorsal plate, so all this is called dorsal plate, and the ventral part is known as the basal plate. So जो ventral part है, it will ultimately develop into the motor system, and the alar plate will ultimately develop into the sensory part of the spinal cord. So the alar plate form the sensory part and the basal plate form the motor part.
A longitudinal groove, the sulcus limitans, marks the boundary between the two, and you can appreciate this also in the diagram that there is a sulcus limitans. इसके पीछे dorsal part है alar plate, इसके आगे ventral part है basal plate. Okay, so see, remember these names, all are very very important. अच्छा जी, अब the dorsal and the ventral midline portion of the neural tube are known as the roof and the floor plates respectively. So dorsal part को roof plate कहते हैं और ventral part को floor plate, जो midline structure है. इसके इधर फिर alar plate और basal plates होंगे on the lateral sides. So again, if you look at the diagram, one can appreciate कि ventral side पर जो midline part है, that is known as the floor plate, और dorsal side पर जो midline part है, that is known as the roof plate. और जो lateral dorsal side के parts हैं, these are alar plates, और ventral parts जो है lateral side पर, they are called the basal plate. So alar plate, basal plate, floor plate and roof plate. Roof plate and alar plate are dorsal located structures, and floor plate and basal plate are ventrally located structures. So far so good. ये सब terminologies आपको आनी चाहिए भाई, इम्तिहान में पूछते हैं. In addition to the ventral motor horn and the dorsal sensory horn, a group of neurons also accumulate as intermediate horns. This horn contains the sympathetic. So this is particularly for the autonomic nervous system, thoracolumbar outflow. Okay. Then some important cells, nerve cells obviously. ये जो पूरा spinal cord develop होगा, इसमें nerve cells होंगे, इसमें supporting cells होंगे. So we have to talk about, और ये सारे जो cells बनेंगे भी हम देखेंगे, they are all actually developed from the primitive neuroblast cell which are present in the wall of the neural tube. So neural tube की जो wall है उसमें ये neuroblast हैं, और ये neuroblast actually they are differentiating into different types of cells. So they initially form the bipolar neuroblast cells. Initially they are round, then they make bipolar cells, और फिर इनमें से primitive axons बनते हैं. So structure इस तरह होता है कि एक तरफ dendrite बनना शुरू होते हैं, एक तरफ axon, फिर वो elongate होता है, and then you get the mature looking neuron. So अगर आप diagram देखें, so that's the initial phase, apolar neuroblast, क्योंकि इसमें कोई axonal या dendritic process नहीं है. फिर you see bipolar, एक पोल इधर बन रहा है, एक पोल इधर बन रहा है. You see the process is coming out, and then you see further maturation, and this is called the multipolar neuron, जिसमें dendrites भी हैं और एक लंबा सा axon भी है. All of them, all these neurons are developed from the neuroblast cells. Okay, so ये सारी बात हम कर चुके हैं already. Let's move on to the ये मैंने आपको बता दिया multi. Now once the neuroblast form, they lose their ability to divide. Axons of neurons in the basal plate break through the marginal zone and become visible on the ventral aspect of the cord. Collectively, they are known as the ventral motor root spinal nerve. So basically, what's happening is कि जब ये cells develop हो रहे हैं, तो ventral side की जो cells हैं, you imagine this one. Here we have got the alar plate, which is on the dorsal side. Here we have got the basal plate, which is on the ventral side. तो यहाँ ये जो neurons develop हो रहे हैं, they are coming out as ventral root of the spinal cord. और alar plate में जब processing development होगी, so the neurons start developing here and they come out as a dorsal sensory root, and there is a dorsal root ganglion जो कि develop होगा from the neural crest cell. As a general principle, most of the ganglia of your body, they are derived from the neural crest cells. So that's how it develops. Okay. We also have glial cells in the spinal cord and also in the central nervous system. So they are also formed initially from the neuroepithelial cell and neuroblast, and they differentiate into different sorts of glial cells. उनका काम है support provide करना. These are the supporting cells of your body. And there are several categories. In the mental layer, they differentiate into protoplasmic astrocytes and fibrillar astrocyte depending upon the structure. Another type include the oligodendroglial cell, which are associated with formation of myelin sheaths around the ascending and the descending tracts. Then there are also microglial cells, which are also very important supporting cells. Then we have all these cells under the heading of glial structures. They are primitively formed from the neuroblast cells. Okay, neuroepithelium से बनते हैं ये भी. Now this is a very special category, neural crest cell. जब neural tube develop हो रही होती है और neural folds एक दूसरे की तरफ approach करते हैं, so जो edges हैं जो एक दूसरे की तरफ approach कर रहे हैं, so this is the fold, और ये edge और ये edge, इन edges के corner पर specialized neuroepithelial cells हैं. These are known as neural crest cells. और ये जो neural crest cells हैं, they develop a lot of ganglia.
जिसमें डॉर्सल रूट गैंग्लिया भी है, जिसमें सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम कि किस तरह से ये जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, और जैसे ही ये न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है तो ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ऐसे एट द टॉप जस्ट लाइक अ टोपी ऊपर पड़े हुए हैं, and then they migrate in this direction as well as in this direction, and they form the dorsal root ganglia. इसमें dorsal root of the spinal cord will enter, and then also these neural crest cells they develop the sympathetic ganglia. तो सारा sympathetic ganglia, dorsal root ganglia, they are formed by the neural crest cells. So they are very interesting cells because अगर इनकी migration में या इनके डिफरेंशिएशन में कोई इशू आता है, सो आपके गैंग्लिया डेवलप नहीं होंगे एंड द होल नर्वस सिस्टम विल बी स्क्रूड. During the elevation of the neural plate, a group of cells appear along each edge of the neural folds. These are called the neural crest cells. They form sensory dorsal root ganglia बनाते हैं. They also form, help in the development of the sensory system, because ये dorsal root ganglia है तो पूरा sensory system इस पे dependent है. And they also form, ganglia of the sympathetic nervous system. In addition to form sensory ganglia, cells of the neural crest also differentiate into autonomic neuroblast, Schwann cell, pigment cell, so they're pretty important. And then let's talk about the formation of the spinal nerve. देखिए spinal nerve कैसे बनती है? If this is the spinal cord, here we have LR plate on the dorsal side, then we have a basal plate on the ventral side. So from the LR plate, cells differentiate and form dorsal root में जाने वाले neuron, और वेंट्रल साइड पे बनते हैं फ्रॉम द बेसल प्लेट वेंट्रल पार्ट. तो ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट्स आपस में मिलके बनाते हैं स्पाइनल नर्व. तो इस स्पाइनल नर्व में वंस इट इज फॉर्म्ड इट कंटेन्स बोथ सेंसरी फाइबर एज वेल एज मोटर फाइबर. बेसल प्लेट से जो डिफरेंशिएट होकर न्यूरॉन आएंगे दे आर द मोटर फाइबर्स एंड दीज आर द सेंसरी फाइबर. तो जो स्पाइनल नर्व बनी है दैट कंटेन्स बोथ द फाइबर्स, एंड दिस स्पाइनल नर्व देन डिवाइड्स इनटू वेंट्रल रैमस एंड डॉर्सल रैमस. तो ये जो वेंट्रल रैमस है इसमें भी सेंसरी फाइबर्स भी होंगे, मोटर फाइबर्स भी होंगे, और डॉर्सल रैमस में भी सेंसरी फाइबर्स भी होंगे और मोटर फाइबर्स भी होंगे. सो दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट. Motor nerves begin to appear in the 4th week, arising from the nerve cell bodies in the basal plate. So the basal plate is in the ventral area. इसलिए यहाँ पे जो neurons बनते हैं these are the motor neurons, और LR plate में sensory neuron. ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होती है कि जो सेंसरी पार्ट बनता है फ्रॉम दी LR प्लेट, यहाँ से न्यूरॉन्स निकल के कहाँ एंटर होते हैं? दे एंटर इनटू दी डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और फिर यहाँ से ये जाके मिक्स होते हैं विद द वेंट्रल मोटर रूट. तो जो स्पाइनल नर्व का ट्रंक बनता है उसमें सेंसरी पार्ट भी है और मोटर पार्ट भी है. ओके, सो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ द फाइबर्स collect into bundles known as the ventral nerve root and dorsal nerve root के साथ मिलके dorsal nerve root obviously goes through the dorsal root ganglia and they make the spinal nerve, and the spinal nerve is divided into dorsal and the ventral primary rami, which is demonstrated here. Okay, there is a dorsal root, there is a ventral root, spinal nerve, then ventral part ramus and dorsal ramus. Okay, so that's pretty easy to understand, but you have to at least know this. और ये जो ventral rami है, ये ventral rami है, they then form in certain parts of the body, they form plexus. For example, brachial plexus. So brachial plexus is formed by the ventral primary ramus of a spinal nerve. Okay. Then what is myelination? The Schwann cells myelinate the peripheral nerve. तो आपके periphery में जो nerves जा रही हैं, they are myelinated by Schwann cells, and they usually each Schwann cell myelinate only a single axon. तो पेरिफेरल नर्व में तो ये मामला है, लेकिन जो सेंट्रल सिस्टम है उसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, एंड अनलाइक Schwann cells a single oligodendrocyte can myelinate up to 50 axons in the central nervous system. So that's an important point. अच्छा जी, अब positional change of the cord in the 3rd month of the development, the spinal cord extends the entire length of the embryo. इन पूरे एम्ब्रियो की लेंथ में देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली द स्पाइनल कॉर्ड और जो बाकी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ में डिफरेंस आता है. सो द वर्टिब्रल कॉलम ओवर ग्रोस एंड द स्पाइनल कॉर्ड रिमेन्स एट दिस लेवल. अब देखें वर्टिब्रल कॉलम का नीचे चला गया, स्पाइनल कॉर्ड यहीं तक है. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि there is a mismatch between the growth of these two structures. With an increasing age, however, the vertebral column and the dura mater grows more rapidly as compared to the spinal cord. As a result ये होता है कि disproportionate growth हुई नहीं है, तो इसमें जो spinal cord है वो ऊपर रह जाता है, and then quadra equinia इस तरह से बन जाता है, because जो roots हैं dorsal ventral roots अब वो इस तरह से नीचे move करती हैं, they make a horse tail appearance. ये हमने anatomy में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है.
फाइलम टर्मिनल क्या चीज़ है, क्वाडा एक्वेनिया, लंबार पंक्चर इसीलिए हम करते हैं एट द लेवल ऑफ द L4 L5 बिकॉज वी आर प्रीटी श्योर कि इस पॉइंट पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया एंड वी आर ओनली एंटरिंग इनटू द स्पेस जिसमें CSF मौजूद है. राइट नाउ मैंने आपको बताया कि जितना भी ये डेवलपमेंट का हमने स्टोरी भी डिस्कस किया है इसमें सारे में हमें द पॉइंट इज क्या हो रहा है ये तो हम बताते हैं एम्ब्रियोलॉजी में, कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता होता. अ वेरी लिटिल मोलिकुलर इवेंट्स आर नोन कि क्या जेनेटिक रेगुलेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट. सो वो थोड़ी बहुत जीन्स जो पता है वो देख लेते हैं. नाउ dorsal part of the spinal cord and the ventral part of the spinal cord are dependent upon concentration gradients between the members of TGF beta family. Okay, growth factors secreted in the dorsal new in the sonic hedgehog as well. So हर जगह ये आपने देखा है डेवलपमेंट में sonic hedgehog बड़ा important player है. Initially, the bone morphogenetic protein, the BMP4 and 7, are secreted by the ectoderm overlying the neural tube. Neural tube के ऊपर जो ectoderm है उनसे ये BMPs release होते हैं. And the presence of these proteins establishes a second signaling center in the roof plate. Then BMP4, TGF beta, BMP5 and 7, they all play some role. What exactly we don't know. Similar events occur in the ventral region of the neural tube. So this was all happening in the dorsal region. So this is the sensory part. And ventral part maybe sonic hedgehog is an important player which differentiate the ventral part of the spinal cord into formation of the motor unit. So the dorsal unit is formed, the motor unit is formed, and they both combine together. So if you look at the diagram here, this gives you an idea that these are the areas where sonic hedgehog express हो रहा है, and then bone morphogenetic proteins BMPs. Thus, two overlapping concentrations are established between TGF beta family members and sonic hedgehog family members. These gradients then activate the transcription factors that regulate the differentiation of sensory and motor neurons. For example, high concentration of TGF beta factors and very low concentration of sonic hedgehog in the dorsal part activates PAX3 and 7, which control the formation of sense. So, ये हमारी understanding है कि spinal cord है ना, उसका जो dorsal part है, suppose this is the dorsal part and this is the ventral part. तो dorsal part में what happens कि there is high concentration of TGF beta and concomitant low concentration of sonic hedgehog pathway. As a result of this, transcription factors PAX3 and PAX7 are overexpressed और इनकी overexpression से sensory system develop होता है. इसको opposite कर दें तो ventral side पे motor system develop होता है, that sort of thing. Okay, और जो transcription factors ventral side पे activate होते हैं, these are NKX 2.2 and 6.1. Immediately dorsal to this region where slightly lower concentration of sonic hedgehog and higher concentration of TGF beta occur, expression of NKX 6.1 and PAX is initiated. And these transcription factors induce differentiation of ventral motor horn cells. These interactions continue to produce all the... So, what is the point? The point is that we actually don't know what exactly is happening. We know very little कि इस part में TGF beta high, sonic hedgehog low as a result of PAX7 and sensory development. इस region में motor development. So, very little is known. These are the genes that are known, so you need to know them, okay? Now, spinal cord की development के साथ correlated some clinical stuff, neural tube defects. Most common of the spinal cord, most defects of the spinal cord result from abnormal closure of the neural fold. मैंने आपको बताया था कि neural folds have to close. Cranial fold भी close होता है और caudal fold भी close होता है. वो नहीं होगा, then there is a problem. The resulting abnormality is known as neural tube defect. May involve the meninges, the vertebrae, the muscles. The birth prevalence of neural tube defects, including spina bifida, varies among different populations, may be as high as 1 in 200 births in some areas, such as in northern China. It's a very high rate. The birth prevalence of neural tube defects in United States has decreased because they use like early screening and also use of folic acid and required medications. So the incidence has gone down. Okay. Now, one of the neural tube defect called spina bifida, it affects the spinal region. It consists of a splitting of the vertebral arches and may or may not involve the underlying neural tissue. Spina bifida occulta इसकी एक category है जिसमें there is defect in the vertebral arches that covered by skin and normally does not involve the neural tissue. सिर्फ ये कि bony structure affected है. So if you look at the diagram here, you see the bony arch is not complete, and this is called spina bifida occulta. But if the meninges are also involved, they protrude, it is then known as meningocele. If the nervous tissue also protrude and herniate, this is called meningeomyelocele.
Okay, so these are three different terminologies: spina bifida occulta, then meningeocele, and then meningomyelocele, yeah, myelomeningocele. Okay, occasionally, these are very rare. Occasionally, the neural folds do not elevate but remain as flattened mass of neural tissue known as rashes. पता नहीं मैंने सही pronounce किया कि नहीं. Hydrocaph requiring intervention develops 80 to 90% of the children born with severe neural tube defects and is often related to presence of also other problems such as Arnold-Chiari malformation. So basically, it's increased CSF within the ventricles, and the obstruction of the outflow of the CSF causes hydrocephalus, big head. Okay, let me see if there is a diagram shown there. That diagram is spina bifida, so that's the problem here. Okay. Then what else? Spina bifida can be diagnosed prenatally with the ultrasound, also by determination of alpha fetoprotein. And nowadays, मैंने आपसे कहा ना कि US वगैरह में तो incidence काफी कम हो गया है because there are sequential and periodic ultrasounds. काफी extensive और exhaustive किस्म का prenatal scan होता है different time points पे. So therefore, it is अब इसका incidence भी कम हो रहा है, पता भी चल जाता है, so it can be corrected actually. So the vertebrae can be visualized by 12 weeks of gestation, and defects in the closure of the vertebral arches can be detected. Experimental treatment for the defect is to perform a surgery in utero. So that is now a new specialty. As early as 22 weeks of gestation, the fetus is exposed by incision into the uterus. The defect is repaired. Wow. Inside the mother's womb, the defect is repaired. I mean, imagine this is what is happening. Hyperthermia, valproic acid, and hypervitaminosis A are also associated with neural tube defects. Okay, and there are also a lot of teratogens affected. The origin of most neural tube defects is multifactorial, and likelihood of having a child with such a defect increases significantly once one affected offspring is born. यानी एक बच्चा ऐसा हो गया तो और होने के chances ऐसे ज़्यादा हैं. Prevention of many neural tube defect is possible if the woman starts taking folic acid 400 micrograms a day, starting at least 1 month prior to the conception. यानी fertilization से 1 महीना पहले से लेना शुरू कर दो बॉस. Such a protocol reduces the occurrence of neural tube defects by as much as 50 to 70%. और क्या चाहिए यार? सिंपल एक इतनी चुन्नी सी गोली होती है फॉलिक एसिड की, रोजाना लो. अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, कंसीव प्लान कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन प्लान कर रहे हैं, देन टेक दिस टैबलेट अ मंथ प्रायर and the chances are reduced इतना कम हो जाए 50 to 70% down. Okay, now folic acid may also reduce the incidence of autism. ये फिर एक अलग use है folic acid का, which we are not discussing at the moment. Okay, so that's all about spinal cord. It comes in different flavors of embryological disorder. Embryology में जाहिर है जहाँ इतनी movement of cells है involved, जहाँ इतनी structure बनना, इतनी differentiation involved है, तो इतने सारे जहाँ processes हो रहे होंगे वहाँ गड़बड़ का चांस भी है. जब गड़बड़ होगी तो फिर डिजीज होगी, विच इज व्हाट वी कॉल द कॉन्जेनाइटल एनोमली. ओके, चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. अच्छा, ब्रेन की जो डेवलपमेंट है ये अपेरेंटली काफी डिफिकल्ट लगती है बिकॉज स्टूडेंट्स वो सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली पढ़नी नहीं होती. मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ. ये इस तरह से है, देखो ब्रेन का, एडल्ट ब्रेन का भी पूरा जो फंक्शन है वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है. वो हमें नहीं पता कि ब्रेन किस तरह काम करता है. सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली हैव एन आंसर टू हाउ डू वी स्टोर आवर मेमोरी. सो वी रियली डोंट नो. इट्स अ वेरी वेरी डिबेटेबल टाइप ऑफ थिंग. सो एडल्ट ब्रेन के भी फंक्शंस नहीं पता. बिल्कुल इसी तरह हाउ ब्रेन इज डेवलपिंग ये नहीं पता. सो अभी जो आगे टेक्स्ट है उसमें सिर्फ क्या बताया कि ऐसा होता है, फिर यहाँ ये स्ट्रक्चर बनता है, वहाँ. इसका तरीका ये है इस पूरे टेक्स्ट को समझने का कि फर्स्ट गो रीड द एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन. आपको एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन पता होनी चाहिए. सो यू शुड नो व्हाट इज डायनसेफलॉन, यू शुड नो व्हाट इज टेलेनसेफलॉन, यू शुड नो हाइपोथैलेमस किधर है, अमेग्डाला किधर है, वेंट्रिकल्स किधर है, फोर्थ वेंट्रिकल किधर है, डक्ट किधर है. सो ये तमाम स्ट्रक्चर एडल्ट के आपको पहले पता होने चाहिए. मेरी न्यूरो एनाटॉमी की वीडियोस जाके देखें. एंड वंस यू नो दोज स्ट्रक्चर्स, तो फिर यहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग है कि ब्रेन जो है उसके कॉर्डल पार्ट पर फोर्थ वेंट्रिकल डेवलप होना शुरू होता है जिसके ऊपर पॉन्स बनता है. सो बेसिकली ये जो सारा पार्ट है जिसको हमने 3 ब्रेन वेसिकल्स कहा था, प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन और रोम्बेनसेफलॉन, इन तीनों से फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन डेवलप होते हैं और उनके तमाम स्ट्रक्चर्स. सो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इट कनेक्ट्स विद द स्पाइनल कॉर्ड. सो वी नो दैट मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड इन द एडल्ट structure. So
टू बी ऑनेस्ट एम्ब्रियोलॉजिकली बहुत सारे फैक्ट्स आपके सामने आएंगे नहीं, बट आपको मैंने पॉइंट बता दिया कि यू नीड टू नो द एडल्ट एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन एंड देन यू जस्ट नीड टू रीड इट. ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज व्हाट दे आर जस्ट टेलिंग यू इज कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है. सेरेब्रल हेमिस्फीयर बनते हैं, उनके बीच में कॉर्पस कैलोजम बनता है. सेल्स किस तरह डिफरेंशिएट हो रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट वी डोंट नो. कुछ मोलेकुलर प्लेयर्स बताए हैं जो अभी इस सेक्शन के एंड में बताऊंगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर रेगुलेटर्स हैं पर्टिकुलर डेवलपमेंटल साइट्स के. लेकिन बस सडनली व्हाट हैपेंस कि सम ऑफ द सेल्स डिफरेंशिएट इनटू दीज स्ट्रक्चर्स, सम ऑफ द सेल्स मेक न्यूक्लियाई, सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स मेक दीज गैंग्लिया. दैट्स व्हाट हैपेंस. हाउ do they do it? We really don't know. So the brain is sometimes divided into brainstem. Brainstem is the major central part which is actually connected with the medulla. So all this is again anatomical stuff. ठीक है. Methane Cephalon is the part which develops into the hindbrain, and it consists of Myelination Cephalon and Methane Cephalon, which extend from the pontine flexure to the rhombencephalic isthmus. So this is the area. So here is the pontine flexure. Then we have these two parts which are ultimately will develop into this part is the hindbrain. Okay, so this is the Myelination Cephalon, for example, and here would be the Methane Cephalon. Now Myelination Cephalon give rise to medulla oblongata. अब देखें इस तरह की लाइंस लिखी हुई हैं कि it gives rise to medulla oblongata. That is the only thing that you have to remember. इसके बाद की जो डिटेल्स है वो क्लैरिटी है ही नहीं, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बड़ा ड्राई लगता है because it's not very clear. The basal plate similar to that of the spinal cord contains the motor nuclei. ये रूल सिमिलर है. अभी जो हमने ऊपर spinal cord में किया था कि जो basal part है that forms the ventral part and the particularly in the spinal cord और central nervous system के brain के component में it forms the motor nuclei, and these nuclei are divided into three different groups: somatic efferents, a special visceral efferent. So these are the fibers going to the viscera. These are the fibers going to the somatic muscles, and the general visceral efferent. These are also going to the viscera. The somatic efferent group contains motor neurons which form the cephalic continuation of the anterior horn cells in the spinal cord, basically. Because this group continues rostrally into mesencephalon, it is called the somatic efferent column. So this is unnecessary, confusing stuff. Don't have to worry about it, okay? And then they are talking about some other fibers which are special efferent going to the viscera. This extends into the metencephalon, forming the special visceral efferent motor column. Its motor supply is towards the striated muscles of the pharyngeal arches. So this is the group which then supplies the pharyngeal arches. And in the myelencephalon, the column is represented by 11, 10 and 9 glossopharyngeal nerves. फिर general visceral efferent group जो है, that contains the motor neurons which supplies the involuntary musculature of the respiratory tract, intestinal tract and heart tract. This is a little difficult thing to remember, but that's how it is. आपको ये याद रखना है कि we are talking about myelencephalon, and the myelencephalon में जो cells हैं वो aggregate होके तीन groups बनाते हैं: somatic efferent, special visceral efferent, general visceral. कौन सा किसको supply करता है वो details यहाँ लिखी हैं. You just have to remember them. Okay, I just can't help you remembering them. This is just pure ratification type of thing. So here you look if this diagram, these are the group of cells which are being generated. Special visceral afferent, that's the afferent group. Separate अभी पढ़ते हैं इसके बारे में. अभी हम बात कर रहे थे efferents की. So special visceral efferent group, ventral side पे motor, this is all the motor area. It is formed from the basal plate. These are the things that you have to remember. And then somatic efferent. So, and then there is also a group called general visceral efferent. So these are all the motor efferent fibers. Okay. Then the LR plate जो sensory part develop करती थी spinal cord में, यहाँ भी ऐसा ही है. The most literal of these are the somatic afferent. So general principle ये है कि जो motor fibers होते हैं, these are also called efferent fibers because they go away from the central nervous system to the target organs. और जो afferent fibers होते हैं वो sensory fibers होते हैं. So sensory fibers are being developed from the LR plate, and motor fibers are all developed from also in the brain from the basal plate. So ये terms आपको पता होनी चाहिए. जितनी मालूमात रखनी है उतनी रखनी है, बाकी आपने skip on करनी है. Okay, right. टेम्परेचर एंड टच के फाइबर, ये सारे न्यूरोएनाटॉमी के ट्रैक्स में हमने पढ़ा हुआ है. यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये डेवलप होता है, ये डेवलप होता है, ये डेवलप होता है. दैट्स इट.
और ये सब डेवलप हो रहा है. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट हाइंड ब्रेन. और हाइंड ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट हम बात कर रहे हैं? माइलिन सेफलॉन. सो ये सब कुछ हो रहा है इन द माइलिन सेफलॉन रीजन. ओके, देन वी हैव द मेथेन सेफलॉन. सिमिलर टू द माइलिन सेफलॉन, इज कैरेक्टराइज्ड आल्सो बाय द बेसल एंड द एलआर प्लेट्स. तो बेसल से यहाँ पर भी मोटर कंपोनेंट बनेगा, एलआर प्लेट से यहाँ पर भी sensory component banega. And from these regions, two new components form, which are the cerebellum. Cerebellum develops, and the other one is the pons. कैसे? We really don't know. अब हर basal plate जो है, the basal plate is going to make the motor fiber, so efferent fiber. ठीक है? So they will form the medial somatic efferents and also give rise to the nucleus of the abducens nerve, because this is where it is present in this area, abducens nerve का nucleus. So adult anatomy याद रखनी है, और फिर यहाँ ये सिर्फ बता रहे हैं ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है. They're not talking about कैसे बनता है. So if you read this all, आप cerebellum पढ़ें. cerebellum पूरे का पूरा यहाँ पे anatomy explain की हुई है. We don't know कि embryology में हो क्या रहा है. So don't confuse yourself with the text कि ये काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है और क्या है. So don't worry about it. ये आपको पता है कि adults जब सेरिबेलर कॉर्टेक्स की हम बात करते हैं तो मल्टी लेयर है, उसमें पुरकंजी सेल्स हैं. सो रादर रीड दिस फ्रॉम द एनाटमी. ओके, इसमें एनाटमी के अलावा जो एम्ब्रियोलॉजी के पॉइंट्स आते जा रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ. फिर है जनाब मीजेन सेफलॉन. मीजेन सेफलॉन मिड ब्रेन बनाता है. ईच बेसल प्लेट कंटेन्स 2 मोटर न्यूक्लियाई. बेसल प्लेट मीन्स मोटर न्यूक्लियाई, ये याद रखने की बात है. और यहाँ जो मोटर न्यूक्लियाई हैं वो सोमैटिक ग्रुप के बनते हैं, विच आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय ऑक्यूलोमोटर एंड ट्रॉक्लियर नर्व्स और जनरल विसरल इफरेंट. तो दो तरह के ये सोमैटिक इफरेंट और जनरल विसरल इफरेंट बनता है, जिसका जो न्यूक्लियस है दैट इज द एरिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. अगेन ये मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि मिड ब्रेन में क्रस्ट क्या चीज़ है, कॉलिकुलस क्या चीज़ है. सो बेसिकली गो रीड माई लेक्चर्स ऑन एनाटमी. एम्ब्रियो पे इन्होंने बात ज़्यादा की नहीं है क्योंकि एम्ब्रियो यहाँ पे हमें टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं है. देन द फोर ब्रेन, आपको पता है कि फोर ब्रेन में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं उसकी एनाटमी क्या है, उसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बाकी तमाम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स. सो द प्रोजेंसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ टी-लेंसेफ्लॉन which forms the cerebral hemisphere and diencephalon which forms all these structure. There's an optic cup, so formation of the eye from the diencephalon. Pituitary, thalamus, hypothalamus, epiphysis all are formed from basically the diencephalon part of the prosencephalon. अब डायनसेफ्लॉन की फिर डिटेल्स बताई हैं इन्होंने. अगेन दे हैव कम्प्लीटली टोल्ड एनाटमी बेसिकली, और एक ही चीज़ बताइए कि सोनिक हेजॉग इज द वेंट्रल मिडलाइन. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. मॉलिक्यूलर प्लेयर्स में आपको पढ़ाता हूँ. अलार प्लेट, thalamus and hypothalamus. So the alar plate forms the lateral wall of the diencephalon. I would skip this because this is never asked in the exam. What you need to know is the final anatomy of each structure. So this is, for example, the final anatomy of different nuclei present at the level of midbrain. And this is how you need to remember it. और ये सारे स्ट्रक्चर देखें, ऑनेस्टली ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि जी लिटरल वेंट्रिकल डेवलप हो जाता है, कॉर्पस स्ट्राइड डेवलप तो हो जाता है और अल्टीमेटली वो एडल्ट एनाटमी की फॉर्म ले लेता है. दैट वी नो. कैसे? दैट वी डोंट नो. ओके, सो इट्स ऑल एनाटमिकल स्टफ. न्यूरो एनाटमी से पढ़ लो यार, ये सारी चीज़ें जो है, सारे नाम न्यूरो एनाटमी से पढ़ लीजिए. सेरेब्रल हेमिस्फीयर ऑल्सो, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है कि इसकी जो डेवलपमेंट है बिगिंस एट द 5th week of development as bilateral evagination from the lateral wall of the prosencephalon. By the middle of the 2nd month, the basal part of the hemisphere begins to grow and bulge into the lumen of the lateral ventricle. Corpus striatum बनाएगा. Again anatomy, no कैसे हो रहा है, किस तरह फोल्ड हो रहा है, वी एक्चुअली डोंट नो. सो इनका भी कसूर नहीं है. किताब में वो तब लिखेंगे ना जब ये सारी चीज़ें डिटेल से पता होंगी. सो आई एम काइंड ऑफ स्किपिंग ऑल दिस बोरिंग टेक्स्ट सो दैट वी इमीडिएटली गो ऑन टू द इंपॉर्टेंट स्टफ जो एम्ब्रियोलॉजी से एसोसिएटेड है. सो द मेनिंजेस, देयर 3 मेम्ब्रेनस लेयर, ड्यूरा, अरेक्नॉइड एंड पाया. सो ये भी आपको एनाटमी से पता है. द पाया एंड अरेक्नॉइड आर combinedly known as leptomeninges. Eventually the pyometer adhere closely to the surface of the brain as well as the spinal cord. Subarachnoid space भी आपको पता है अरेक्नॉइड के नीचे होती है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. अब मुझे आप बताएं, ये पूरा आपने पढ़ लिया, इसमें एम्ब्रियोलॉजी किधर है ही नहीं. ओके, द ड्यूरा मैटर इज टफ फाइब्रस सैक, ये भी आपको मालूम है. ये सब इज द एनाटमी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिकॉज एम्ब्रियोलॉजी में इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है बनता कैसे. इनिशियल चीज़ पता है कि हाउ द न्यूरल प्लेट इज फॉर्म, न्यूरल फोल्ड्स आर फॉर्म, न्यूरो एपिथेलियम इज फॉर्म. आगे की कहानी सिर्फ इतनी है कि उन न्यूरो एपिथेलियल सेल में डिफरेंशिएशन होती है और ये तमाम स्ट्रक्चर इस तरह बनना शुरू हो जाते हैं कि ये शेप ले लेते हैं, ये होता है, ये होता है. कैसे होता है पे कॉमेंट नहीं है. Cerebrospinal fluid is secreted by the choroid plexus. Again, all anatomy stuff. So go read the neuroanatomy books, okay? The very little which is known about the molecular regulation of the brain development, again, not much is known. I'm telling you again and again. कुछ जीन्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं बेसिकली.
और वो हम देख लेते हैं कौन सी हैं. Craniocaudal patterning of the CNS begins early in the development during gastrulation and neural induction. Once the neural plate is established, the signals for segregation of the brain into forebrain, midbrain, and hindbrain region are derived from the Homebox genes and they are expressed in the notochord. So ये जो तीन vesicles बनते हैं ना, prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon, they are because of the Homebox, these homeobox genes. Okay, the hindbrain has 8 segments जिनको हमने rhombomere का नाम दिया है. These are basically associated with a class of genes called the Hox genes. Okay, these genes are expressed in overlapping pattern. This is not important. The genes then confer the position. Not important. How this regulation occurs is not clear. See, this is the point. Although retinoic acid play a critical role in regulating Hox expression, for example, excess retinoic acid shift the Hox gene expression anteriorly and causes more cranial rhombomere. So पूरी shifting of the rhombomere जगह change कर लेती है, जिसकी वजह से congenital anomalies हो सकती हैं. There is also a differential response, but again, these are all the theories. We don't know this for sure. A specification of the forebrain and the midbrain area is also regulated by genes containing a homeodomain. However, these genes are not of antennapedia class, whose most anterior boundary not important. कभी नहीं पूछते एग्जाम में. तो अब तक क्या क्या जीन्स के नाम आपको ये इंपॉर्टेंट है? होम्योबॉक्स जीन्स, हॉक्स जीन्स और रेटिनिक एसिड से इसकी एक्सप्रेशन पैटर्न बढ़ जाता है. Thus, new genes have assumed the patterning role of these regions of the brain, which evolutionarily constitute the new head. At the neural plate, LIM1 expressed in the precaudal plate and OTX2 expressed in the neural plate are important for designating the forebrain and midbrain areas. LIM1 supporting OTX2. So these two are the new names that you have to remember. Basically ये करती है कि developing embryos में different parts के cells निकाल के उनका DNA निकाल के gene expression profile पढ़ते हैं. अब actually next generation sequencing आ गई तो इसको और extensively study करना चाहिए. But kind of इस पे लोग शायद इतना interested नहीं है. Some groups are doing research on this, I know. So I am pretty sure कि बहुत सारी genes का role इसमें भी पता लगेगा. Once the neural folds and pharyngeal arches appear, additional homeobox genes, including OTX1, EMX1, EMX2, are starting to express. Now, again, इनका exact role नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि express हो रही हैं and maybe they are, promoting some role in the development of the brain. Similarly, fibroblast growth factor 8 is the key signaling molecule inducing subsequent gene expression and regulate differentiation. बस इतना general statement हमें पता है. In the ANR, and what is ANR is the anterior neural ridge region at the 4 somatic stage, fibroblast growth factor 8 expression of FOXG1, a transcription factor that regulates development of the T-Cephalon. So at least this is linked with the T-Cephalon development. Okay. FGF8 is expressed in a ring around the circumference of this location, which also induces expression of Ingrailed1 and Ingrailed2, two homeobox containing genes expressed in gradients radiating anteriorly and posteriorly. So if I were you, मैं इसको ऐसे याद रखता कि can I remember the names of the genes and the associated developmental organs which are known. अगर मुझे इतना याद रहता तो I would have been happy. इससे ज़्यादा तो याद रखने की ना इन्फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा याद रखने के लिए ये बोरिंग सी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है. ओके, Wnt1 is an important player which is also expressed and helps in the development of the brain region. Sonic Hedgehog is the key player. पैटर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है पूरे नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स की डेवलपमेंट. NKX 2.1 and this is also a homeodomain. So homeodomain genes are all very closely linked with the development of the brain. Importantly, sonic hedgehog signaling requires cleavage of the protein. Unnecessary details. अच्छा, dorsal lateral patterning of the neural tube, BMP4 and BMP7 have been incorporated. Also, some gene expressions such as LHX2 for development of the cortex regions. Okay, sonic hedgehog बार-बार आपको इनाम मिलेगा. So that's basically a dry thing, but ये सारा याद भी नहीं रखना. That's the good news ना. अच्छा, अब कुछ abnormalities हैं. For example, holoprosencephaly refers to a spectrum of abnormalities in which loss of midline structure result in malformation of the brain and face. तो इसमें काफ़ी सारी डिजीजेज इन्वॉल्व हैं. इट्स नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर जिसमें मिडलाइन स्ट्रक्चर्स नहीं बनते. मिडलाइन स्ट्रक्चर, ब्रेन भी मिडलाइन स्ट्रक्चर है ना, बॉडी के मिडलाइन में होता है. इन सीवियर केसेस द लेटरल वेंट्रिकल्स मर्ज इनटू अ सिंगल टेलेंसेफलिक वेसिकल. दैट्स अनदर प्रॉब्लम. द आईज आर आल्सो फ्यू. सो मिडलाइन इश्यूज बेसिकली इट हैज बीन एसोसिएटेड विद sonic hedgehog mutations. So that's how you know that how important this sonic hedgehog
expression is for development of the midline structure and patterning of the whole brain development basically. Then there are some specific mutations known, और वो for example TGIF mutation है, single oculus Homebox 3 mutations हैं. Well, even if you don't remember, I have not seen this being asked in exam. Terminologies are important. ये पूछते हैं. So for example, they will ask you define holoprosencephaly. They may also ask you what is schizencephaly. It's a rare disorder in which the large cleft occur in the cerebral hemisphere, sometimes causes loss of brain tissue. So if you are losing brain because of big clefts, or the reason being cell differentiation or migration proper नहीं हो रही. Now, mutation in the Homebox gene EMX2 is associated with schizencephaly. Okay? अच्छा, फिर ये defects हैं meningocele, meningomyelocele. ये हमने spinal cord के साथ तो पढ़ी हैं, लेकिन they can also be, stuff like this. So the meningocele, meningomyelocele, if the nervous tissue is also coming out, they also happen in the cranial region as well. Okay? Then there is exencephaly. It is characterized by failure of the cephalic part of the neural tube to close. तो इसकी वजह से होता ही है कि पूरा वॉल्ट ऑफ द स्कल बनता ही नहीं है, ब्रेन का पार्ट नहीं बनता. सो देयर इज कंप्लीट एब्सेंस. दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एनेंसेफली. एनेंसेफली का मतलब ये है कि द ब्रेन स्टेम होगा, लेकिन ब्रेन का जो फोर पार्ट है, फोर ब्रेन वाला एरिया, वो पूरा बनता ही नहीं है. ठीक है. समटाइम्स ब्रेन स्टेम इज देयर, बट द अपर सेंटर, द फोर ब्रेन, द सेरिबेरम, all these things are absent. In some cases, the closure of the यहाँ diagram में दिखाया भी, this is a guy with anencephaly, so no head, basically no brain. Okay. Then in some cases, the closure defect of the neural tube extends caudally into the spinal cord, and the abnormality is then known as cranioreschisis. सो ये पूरा नीचे तक एक्सटेंड करता है और ओपन होता है स्पाइनल कॉर्ड के एरिया तक. सो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. हाइड्रोसेफलस इज ए इशू जिसके अंदर देयर इज एन एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द CSF. इट कैन बी बिकॉज कि अगर CSF का जो पूरा सर्कुलेशन है, जैसे डक्ट ऑफ सिल्वियस है, वो ब्लॉक हो जाए या एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो ज़्यादा, तो CSF बढ़ जाएगा, सो प्रेशर बढ़ जाएगा पूरा सिस्टम के अंदर. माइक्रोसेफली डिस्क्राइब्स द क्रेनियल वॉल्ड दैट इज स्मॉलर देन नॉर्मल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द क्रेनियम. रियली डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द ब्रेन. सो इफ ब्रेन इज नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली, सोनिक हेजहॉग में म्यूटेशंस हैं, या जितनी भी जीन्स के हमने नाम ऊपर देखे, उनमें अगर इश्यूज हैं, सो ब्रेन डेवलप नहीं होगा, स्कल डेवलप नहीं होगा, माइक्रोसेफली. ओके. सो ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then that's basically it. Okay. And many of the CNS issues are associated with use of maternal alcohol in very very high quantities, which are not actually recommended. Okay. So I know this was pretty boring stuff. ब्रेन की डेवलपमेंट पर्टिकुलरली, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, बिकॉज ज़्यादा कुछ नोन है नहीं. समझाएंगे तब जब खुद समझा हुआ होगा. इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं. सो इसको इसी तरह पढ़ें जिस तरह पढ़ाया मैंने आपको, एंड यू विल बी फाइन इन द एग्जामिनेशंस. ठीक है. अब क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं. बाय द एंड ऑफ द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, नाउ दिस इज वेरी अर्ली टाइम इन डेवलपमेंट, ओनली 4 weeks, बट 4 हफ्ते पर भी न्यूक्लियाई ऑफ ऑल द 12 cranial nerves are present in the developing embryo. सो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि how early it starts forming. All except the cranial nerve 1 and 2 arise from the brainstem. So all of them except 1 and 2, and of these, only the oculomotor, which is nerve 3, arise outside the region of the hindbrain. So these are the 3 exceptions that you have to remember. In the hindbrain, proliferation centers in the neuroepithelium. This is the epithelium basically which ultimately develops into all the cranial nerves. It establishes 8 distinct structures which are called rhombomeres. अब ये जो rhombomeres हैं, let me show these rhombomeres to you in the diagram. These are the rhombomeres. The neuroepithelium में ये 8 distinct, जैसे somites बनते हैं, इस तरह के structures हैं. Rhombomere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. और ये जो rhombomeres हैं, they give rise to cranial nerve 4, because 1, 2, 3 they were in exception. 5, 6, 7, 9, 10, 11 and 12. So these are the direct derivatives of these rhombomere structures. Okay, तो ये आपको इस तरह से याद रखना है. Establishment of this segmental pattern appears to be directed by the mesoderm collected into the somatomeres beneath the neuro. So यहाँ somites भी develop हो रहे हैं, and somites के ऊपर there we develop the neuroepithelium के अंदर rhombomeres. Now motor neurons, अब cranial nerves में आपको पता है there are motor neurons as well as sensory fibers. So the motor neurons for cranial nuclei are within the brainstem, whereas sensory ganglia are outside the brain. Thus, the organization of the cranial nerves is homologous to that of the spinal cord. अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. And इतना याद रहे कि जो cranial nerves हैं, they also contain motor and sensory component, just like the spinal nerves.
cranial nerve sensory ganglia originate from a series of ectodermal placoids and the neural crest cell. अब बात ये है कि अभी हम जब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया डिस्कस करेंगे वहां भी ये बात आएगी कि जो गैंग्लिया की डेवलपमेंट है, जो गैंग्लियन की डेवलपमेंट है, विच इज बेसिकली द साइट एंड हब फॉर साइनेप्सिस ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक एंड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर. तो गैंग्लिया की डेवलपमेंट इज लार्जली फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, और यहाँ जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो अल्टीमेटली डेवलप होते हैं इनटू द सेंसरी गैंग्लिया आर कॉल्ड ectodermal placoids. Ectodermal placoids include the nasal placode, optic placode, epipharyngeal placoids, and they are represented by ectodermal thickenings dorsal to pharyngeal or epipharyngeal placoids contribute to the ganglia for nerves of the pharyngeal arches 5, 7, 9 and 10. So these are the ones which develop from the epipharyngeal placoid. और जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया है दे आर ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स. और ये किन किन नर्व्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं अभी हम इसकी डिटेल थोड़ी देर में पढ़ेंगे जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करेंगे. सो दीज गैंग्लिया आर एसोसिएटेड विद क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 and 10. अगर हम इस टेबल को देखें, सो दिस टेबल इज बाय एंड लार्ज एन एनाटॉमी टेबल. तो ये एनाटॉमी में हमने डिस्कस किया हुआ भी है, तो यहाँ मैं नहीं कर रहा कि कौन सी क्रेनियल नर्व किस रीजन के साथ और फिर उसकी इनर्वेशन. सो दैट्स नॉट द टॉपिक हियर, बट दैट शोज समथिंग इंपॉर्टेंट एज फार एज द एम्ब्रियोलॉजी इज कंसर्न. This is the contribution of the neural crest cells in the placoid to the ganglia of the cranial nerve. अभी जो cranial nerves हैं, oculomotor, trigeminal, facial, vestibulocochlear, glossopharyngeal, vagus, इन सब में there are certain ganglia associated. For example, oculomotor के साथ ciliary ganglia is associated, derived from the neural crest cells at the forebrain midbrain junction. अब बात ये है कि आपको अगर इस crest की exact location ना भी याद रहे तो it's fine. बट इतना पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द गैंग्लिया इफ यू सी दे आर ऑल ड्राइव फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल. यू सी ट्राइजेमिनल का जो गैंग्लियन है न्यूरल क्रेस्ट सेल, फेशियल का जो गैंग्लियन है न्यूरल क्रेस्ट सेल, एंड ऑल्सो द एपीफेरेंजियल प्लेकॉर्ड बिकॉज फेशियल नर्व इज ऑल्सो अ नर्व ऑफ अ फेरेंजियल आर्च. तो ऑल द नर्व्स ऑफ द फेरेंजियल आर्चेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम एपीब्रैंकियल प्लेकॉर्ड या एपीफेरेंजियल प्लेकॉर्ड. अच्छा जी, अब ये भी देखें वेस्टिबुलोकॉक्लियर also neural crest cell. So these are all derived from the neural crest cells. Okay, so that's an important message. So let's now start talking about autonomic nervous system. The autonomic nervous system is obviously an integral part of the nervous system. इसीलिए इसकी भी composition, इसकी development, इसको समझना बहुत जरूरी है. ANS is composed of अच्छा ये एक स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है इससे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. वो कहते हैं जनाब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मोटर सिस्टम से क्या ताल्लुक है, बिकॉज दिस इज नॉट सोमैटिक सिस्टम, दिस इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. लेकिन यहाँ बात ये हो रही है आपको जो समझनी है कि देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी जो न्यूरॉन्स जाते हैं, ऑब्वियसली देयर आर टू सेट्स ऑफ न्यूरॉन. एक प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, फिर गैंग्लिया में साइनेप्स होता है, फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है. और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ऑब्वियसली वो जाकर किसी न किसी एरिया को इनर्वेट करेगा. सो फॉर एग्जांपल इट कैन इनर्वेट अ स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तो वहां पे कोई एक्टिविटी करवा रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इफरेंट फाइबर या मोटर फाइबर. सो एएनएस इज कंपोज्ड ऑफ इफरेंट फाइबर्स दैट इनर्वेट द स्मूथ मसल और द कार्डियक मसल और व्हाटएवर स्ट्रक्चर इट इज सप्लाइंग. इट मे बी even the secretory glands, and therefore it sometimes is also known as the visceral motor system. तो ये आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मोटर सिस्टम का मतलब कहीं स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है. यहाँ पर दिस ANS is giving off efferent fiber carrying messages from the central nervous system to the target organ, और जो टारगेट ऑर्गन है उसको हम इफेक्टर भी कहते हैं. इसीलिए इस सिंपैथेटिक लूप को वी आल्सो कॉल इट विजरल मोटर सिस्टम या इफरेंट फाइबर्स. ठीक है, it is composed of two types of components. One is called sympathetic system, the other one is called parasympathetic system. And दोनों ही systems में, चाहे वो parasympathetic system हो या sympathetic system हो, इन दोनों में there are two sets of neurons. One is called pre-ganglionic neuron, the other one is called post-ganglionic. और ये बात हमने कई दफा autonomic nervous system की anatomy में डिस्कस की है. प्री गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन से पहले वाला न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियन मतलब गैंग्लियन के बाद वाला न्यूरॉन. तो स्ट्रक्चर कैसे होता है कि सपोज दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, तो इस स्पाइनल कॉर्ड में से आपको स्पाइनल कॉर्ड की कॉम्पोजिशन पता है. सो यू नो दैट द स्पाइनल कॉर्ड हैज यहाँ से जो डॉर्सल रूट निकलता है एंड देन देयर इज अ वेंट्रल रूट, और ये दोनों रूट्स मिलकर बनाते हैं स्पाइनल नर्व. और फिर ये जो स्पाइनल नर्व है इट इज डिवाइडेड इनटू अ डॉर्सल रैमस एंड अ वेंट्रल रैमस. सो दिस इज द नॉर्मल स्टफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, है ना. अब ये जो वेंट्रल रूट है ना, इसी में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर निकल के बाहर आता है. सो द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडी इधर होगी
और वो वेंट्रल रूट में बाहर निकलेगा, स्पाइनल नर्व में एंटर होगा। अच्छा, स्पाइनल नर्व से ये फौरन निकल के आएगा इस गैंग्लियन में। यहाँ पे एक गैंग्लियन होगा, इस गैंग्लियन में दूसरा एक न्यूरॉन होगा विच वुड बी दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन फिर वापस स्पाइनल नर्व में आएगा और वेंट्रल रेमस के थ्रू जहां इसको जाना है वहां पहुंच जाएगा। सो ये प्री गैंग्लियोनिक एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक, और ये गैंग्लियन में साइनेप्स, ये हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपैथेटिक चेन। इसके और भी सिनेरियोज हैं। सो फॉर एग्जांपल समटाइम्स इट हैपेंस कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है वो नियर द ऑर्गन जाकर साइनेप्स करता है। सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओटिक गैंग्लियन है, टेरिगोपैलेटाइन, सो दीज आर द गैंग्लियन व्हिच आर प्रेजेंट नियर द एंड ऑर्गन्स। सो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जो भी हम डिस्कस करेंगे भी, बट द पॉइंट इज कि चाहे सिंपैथेटिक सिस्टम हो या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हो, दोनों ही सिस्टम्स में देयर इज अ प्री गैंग्लियोनिक एंड अ पोस्ट गैंग्लियोनिक स्टफ। ओके, now preganglionic neurons have their cell bodies in the gray matter of the central nervous system, the spinal cord, and postganglionic neurons have their cell bodies outside the CNS in the ganglia. तो यहाँ जो मैं बात कर रहा था, अभी ये डायग्राम भी हम देखेंगे, दिस डायग्राम, इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड रीजन और साथ में ये सारे गैंग्लिया हैं। सो जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उनकी सेल बॉडी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर ये इस तरह निकल के तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स हैं उनकी सेल बॉडी जो है वो होगी इन द गैंग्लिया। तो ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ओके, राइट, ये बात हो गई। इन जनरल this is not the rule of thumb because इसमें exceptions हैं, but in general norepinephrine is the neurotransmitter in the sympathetic system and acetylcholine in the parasympathetic system. ठीक है, अब इन दोनों systems की development की हम बात करेंगे। Let's first discuss the sympathetic nervous system. The cell bodies of the preganglionic neurons of the sympathetic nervous system are located in the intermediolateral horns of the spinal cord in this level. इसको हम thoracolumbar output भी कहते हैं, thorax 1 से लेके lumbar vertebrae 2 तक। Cell bodies of the postganglionic neurons are located in the paravertebral ganglia. Paravertebral मतलब vertebra के साथ में। So if this is a vertebral column, there is a ganglion chain. इसको हम कहते हैं paravertebral ganglia. ठीक है, and there is another set of ganglia which are called prevertebral ganglia, which are also called pre-aortic ganglia because they are present around the major blood vessels which arise from the aorta, such as celiac, superior. तो ये aorta के इर्द गिर्द है। So कुछ ganglia हैं जो vertebral column के इर्द गिर्द है और कुछ ganglia हैं जो aorta के इर्द गिर्द है। ओके, सो जो वर्टिब्रल कॉलम के इर्द गिर्द हैं दे आर कॉल्ड पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, और जो एओर्टा के अराउंड हैं दोज आर कॉल्ड प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। ठीक है, और बात यहाँ हो क्या रही है, देखें बात यहाँ ये हो रही है कि अगेन इफ यू गो बैक टू दिस डायग्राम, सपोज दिस इज द थोरैको एंड हमने कहा कि L2 तक, सो दिस इज द रीजन फॉर सिंपैथेटिक सप्लाई। सो इस पूरे रीजन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका इंफीरोलेटरल एंटीरियर जो देखें ये लोकेशन है इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की सेल बॉडीज की। सो द इंटीरोमीडियोलेटरल सेल कॉलम या हॉर्न्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सो यहाँ इनकी सेल बॉडीज मौजूद होंगी। सो फॉर एग्जांपल T1 के लेवल पर देयर इज द सेल बॉडी ऑफ अ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और फिर ये इसका न्यूरॉन निकलेगा और ये अब साइनेप्स करेगा विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडी गैंग्लिया में है। ये गैंग्लिया या तो पैरावर्टिब्रल होंगे या प्री वर्टिब्रल होंगे। पैरावर्टिब्रल मतलब स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ साथ साथ, और प्री वर्टिब्रल मतलब जो ब्लड वेसल्स के अराउंड होंगे। तो ये दो तरह के गैंग्लिया आपको सिंपैथेटिक सिस्टम में डेफिनेटली पता होने चाहिए। The paravertebral ganglia are linked by fibers and form the right and the left sympathetic trunks. All of these ganglia originate from the neural crest cell. That is the embryologically important point. कि जितने भी paravertebral ganglia हैं sympathetic chain के, they are all derived from the neural crest cells of the thoracic region that migrate during the 5th week of development. Okay? Crest cells forming the sympathetic trunk ganglia also migrate cranially as well as caudally to extend these trunks into the cervical region, cranial migration, and pelvic region, caudal migration. Migration and positioning is obviously controlled by a set of genes and proteins, BMPs, okay, secreted by the dorsal aorta that act as the chemoattractant for the migrating cell. So these are all embryologically important stuff. Up kuch further details. The preganglionic sympathetic fibers originating from the cell bodies in the spinal cord from the thorax 1 to L2 region exit via the ventral root, enter the spinal nerve, then
ventral primary ramus and almost immediately enter the white ramus. अब ये जो white ramus है communicants to reach the sympathetic trunk. So this is how it reaches the sympathetic. अभी मैं बताता हूँ, ये बात समझाता हूँ. Once in the trunk, it synapses with the postganglionic neuron. Or either they synapse at the same level ganglia, या they ascend or they descend, and they synapse somewhere else in a ganglia. But synapses जरूर होगा. Preganglionic fibers traveling to the prevertebral ganglia are collected into groups called abdominopelvic splanchnic nerves. These include the greater splanchnic nerves, the lesser splanchnic nerves, and the least splanchnic nerves. ये कॉन्सेप्ट समझना जरा जरूरी है. देखें, यहाँ एक हमने डिस्कशन किया कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, वेंट्रल रूट में जाएंगे, स्पाइनल नर्व में जाएंगे और वेंट्रल रेमस में जाएंगे. सो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. सो फॉर एग्जांपल, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड दैट वी हैव गॉट. This is the dorsal root and this is the ventral root, and here we have got the spinal nerve. ये बन गई, ठीक है. This is the spinal nerve. आपको पता है कि spinal nerve बनने के बाद डिवाइड हो जाती है into a ventral ramus and a dorsal ramus. So ये इसका ventral ramus है और ये इसका dorsal ramus है. So what happens कि जो preganglionic fiber है that arises from the spinal cord, it goes into the ventral root, it goes into the spinal nerve, then into the ventral ramus. अच्छा, ventral ramus में आने के बाद it goes here into a ganglia. ये paravertebral ganglia है. अब इस ganglia में आने के बाद there are three fates. Either it will synapse at the same level और यहाँ से post ganglionic fiber निकल जाएगा, or the preganglionic fiber will go in the ganglia and travel up and synapse somewhere else. और वहाँ से post ganglionic fiber निकलेगा, or it goes down and synapse in a ganglia other than the same level और फिर यहाँ से post ganglionic fiber निकलेगा. या फिर इसके पास ऑप्शन है कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो साइनेप्स किए बगैर किसी और ऑर्गन तक चला जाएगा, जैसे कि एड्रिनल मेडुला, और वहां जाके साइनेप्स करेगा, एंड फ्रॉम हियर द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स विल बी इमर्जिंग. सो दीज आर द 3 or 4 पॉसिबिलिटीज. ओके, सो इफ इट इज साइनेप्सिंग इन द पैरावर्टिब्रल रीजन, तो यहां से ये दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर निकलेगा और वो भी एंटर होगा वेंट्रल रेमस में, एंड इट विल. सो ये कम्युनिकेशन ऑफ द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया विद द वेंट्रल नर्व, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर वाली कम्युनिकेशन कहलाती है व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंस, और जब पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर वापस एंटर होता है और आगे नर्व में चलता है तो दिस इज नोन एज ग्रे रेमाई कम्युनिकेंस. ये कम्युनिकेशन जरूरी है क्योंकि स्पाइनल नर्व ही के जरिए ये फाइबर्स आगे जाएंगे. प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनेप्स करेंगे, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर स्पाइनल नर्व से निकल के वेंट्रल रेमस से निकल के गैंग्लियन में जा रहे हैं ताकि साइनेप्स हो, और साइनेप्स के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है या पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो भी वेंट्रल रेमस में एंटर हो रहा है. सो दैट इज द सॉर्ट ऑफ स्टोरी. ओके, तो ये तो कहानी थी जो साइनेप्सिस हो रही है विद द प्री पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया. नाउ देयर इज आल्सो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया ना, तो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया में इन रीजन से स्प्लैंक्निक नर्व्स जाती हैं, right? So then the postganglionic fibers from the sympathetic trunk ganglia to the blood vessels, erector pili muscles, they travel all the way to different parts of the body. Okay? Sympathetic trunk से ये gray rami के जरिए दोबारा ventral rami में आते हैं, and then they travel in the spinal nerves. तो this diagram जो हमने यहाँ डिस्कस की कि the postganglionic fibers re-enter into the ventral ramus and then they are distributed alongside the spinal nerves. This is the anatomy of the autonomic nervous system. ये हमने कई दफा डिस्कस किया है. Embryological point ये था कि ये सारे जो गैंग्लिया हैं they are derived from the neural crest cells. Now the postganglionic fibers from the lower cervical and the upper thoracic trunk ganglia exit the trunks as collection. So this is not the discussion here. Note that because all cell bodies of the preganglionic neurons are located in the spinal cord, इस segment region में thoracolumbar, these segments will be the only ones to have white rami communicants. Obviously ये वाला जो रीजन है T2 से लेके T1 से लेके L2 तक, इसी रीजन में सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, तो इसी रीजन में प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, तो इसी रीजन में व्हाइट रमाई कम्युनिकेंस होगा. सो व्हाइट रमाई कम्युनिकेंस है क्या? बेसिकली इट इज द कम्युनिकेशन ऑफ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर फ्रॉम द वेंट्रल रेमस ऑफ द स्पाइनल नर्व इनटू द स्पाइनल पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक गैंग्लिया. तो ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर सिर्फ कहाँ होते हैं? फ्रॉम T1 to L2. तो ये व्हाइट रमाई कम्युनिकेंस सिर्फ इन्हीं जगहों पर है. That's an important point. Okay. However, because each spinal nerve receives the fibers from the postganglionic, they all have gray rami communicants. So white rami communicants only in this region, gray rami communicants everywhere, all spinal nerves, right? So now the parasympathetic nervous system. अच्छा, preganglionic fibers of the parasympathetic nervous system
उनके भी ज़ाहिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी हैं। तो इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं उनकी जो सेल बॉडीज हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में किस रीजन में हैं? दे आर आइदर इन द ब्रेन स्टेम और दे आर इन द सैक्रल रीजन S2 से S4। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम वो नर्व न्यूक्लियर क्रेनियल नर्व, ऑक्यूलोमोटर नर्व, क्रेनियल नर्व 3, फेशियल नर्व, ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व 9 एंड वेगस नर्व्स यहाँ से निकलते हैं। And the vagus nerve also supplies the parasympathetic innervation to most visceral organs up till the level of the proximal third of the transverse colon. Preganglionic fibers from the sacral component of the system exit the spinal cord via the ventral root of, यही इनका रास्ता है, ventral root से ही निकलेंगे। तो अगर आपको anatomy अच्छे से पता है, spinal cord and the spinal cord में dorsal root, ventral root, spinal nerve, ventral ramus, dorsal ramus, तो जो भी preganglionic fiber है या post ganglionic fiber है उसका ultimately travel करने का रास्ता यही ventral root है। ओके राइट, इनकी जो गैंग्लिया है ना पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, दे आर प्रेजेंट नियर द टिश्यू। So that's the important point to remember. The post-ganglionic parasympathetic neuron cell bodies are in the cranial region। 4 ganglia हैं जो कि ciliary है, pterygopalatine है, submandibular है और otic है, corresponding to the relevant cranial nerves। तो ये ऐसे होता है कि brain stem है, for example, इसमें pre-ganglionic fiber है, it travels all the way to the otic ganglion and this otic ganglion is then present very near to the effector organ। तो जो इसका post-ganglionic neuron होगा वो बहुत छोटा सा होगा, जबकि हम जब सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटा सा होता है और फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत बड़ा सा होता है। एटलीस्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एड्रिनल मेडुला के केस को इससे निकाल देते हैं, क्योंकि एड्रिनल मेडुला के केस में व्हाट हैपेंस कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो बहुत बड़ा होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक छोटा होगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे आर लार्जर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर स्मॉलर। Okay, so the post-ganglionic neurons in the thorax and the abdomen are associated with vagus nerves. This arrangement is also true for the post-ganglionic cell bodies of the pelvic splanchnic nerves in the pelvic region. So that's all anatomical stuff. Now the suprarenal या adrenal gland. The suprarenal gland develops from 2 components. अच्छा, इसकी यहाँ पे हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? You may be thinking कि हम नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट कर रहे हैं and then we are talking about suprarenal gland. The point is कि जो suprarenal gland है sympathetic fibers वहाँ तक travel करके आते हैं. So it has an important connection with the autonomic nervous system. It develops from 2 components. There is a mesodermal portion, mesoderm से originate करेगा, that forms the cortex. लेकिन जो ectoderm का portion है that forms the medulla. And during the 5th week of the development, the mesothelial cells between the roots of the mesentery and the developing gonad begin to proliferate and penetrate the underlying mesenchyme. Here they differentiate into acidophilic cells, which form the fetal cortex and the primitive cortex of the suprarenal gland. Shortly afterward, a second wave of cells from the mesothelium penetrate inside and this surround the original acidophil cell mass. These cells, smaller than those of the first wave, later form the definitive cortex. So अब तक cortex बनने की बात हो रही है. Now these are steroid producing cells and in the second trimester they begin to produce dehydroepiandrosterone, also abbreviated as DHEA, which functions in the synthesis of androgen and estrogen. Some of this compound is converted to estrogen by also the placenta. Soon after the birth, the fetal cortex regresses rapidly, whereas the remaining cells differentiate into 3 definitive zones: the glomerulosa, fasciculata, and reticularis. The cortex primarily secrete these 3 important chemicals, और ये तीनों important chemicals आपकी पूरी body metabolism के लिए बहुत 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 जरूरी है। तो cortex तो ये बन गया। Neural crest cells invade the medial aspect to then develop into the medulla. That is where I'm interested. Neural crest cells से गैंग्लिया भी बने थे, सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ये जितना सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन है ये सब किससे बनी थी? न्यूरल क्रेस्ट सेल से। तो यहाँ भी जब ये कॉर्टेक्स डेवलप हो रहा होता है इनटू द 3 लेयर्स, ग्लोमेरुलोसा, fasciculata, reticularis, the neural crest cells they migrate into the this cup shaped structure and they start developing the medulla and they develop into the chromaffin cells and these cells absolutely behave like the post ganglionic cell. तो जैसे ऐसे समझो कि ये जो एरिया है ये पूरा है गैंग्लियन, ये पूरा एरिया गैंग्लियन बन गया और इस गैंग्लियन के अंदर ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। इसीलिए तो ये लंबे चौड़े प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ट्रेवल करके यहाँ तक आते हैं क्योंकि इसका गैंग्लिया इधर पड़ा हुआ है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिस्टम। सो नेचर ने सारे गैंग्लिया वर्टिब्रल कॉलम के आसपास नहीं रखे, नेचर ने कुछ गैंग्लिया एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी रखे हैं।
Now signals that regulate the migration of these cells, इसमें BMPs involved है, they ultimately develop into chromaffin cells. These cells represent the modified post-ganglionic sympathetic fiber, और जो medulla है, it represent as a ganglia. So adrenal medulla is a ganglia, sympathetic ganglia. आ रही बात समझ में? And they produce epinephrine, norepinephrine. During the embryonic life, the chromaffin cells are scattered widely throughout the embryo, but in the adult, they are present only in the medulla of the adrenal gland. Alright. So, parasympathetic system, ये हमने इसकी anatomy अलग से भी डिस्कस कर रखी है, न्यूरो anatomy में भी पढ़ा है, जनरल anatomy में भी पढ़ा है, यहाँ एक दफा डिस्कशन दोबारा हो गया. Okay. Now, some clinical stuff. Pheochromocytoma, they are tumors involving the chromaffin cells, and they result in excessive production of epinephrine and norepinephrine. So this is a tumor, mass-producing tumor, and they produce increased production of epinephrine, norepinephrine. Or इनके symptoms होंगे high blood pressure, palpitation, all the headaches, all these sort of thing. Most occur in the adrenal medulla because the chromaffin cells are present in adrenal medulla, but 10% can also appear somewhere else in the abdomen. And a small percentage are also familial, associated with RET gene mutations. Then there is a disease called congenital megacolon, also known as Hirschsprung disease. It results from failure of the parasympathetic ganglia to form in the wall of the gut. So basically colon और rectum में parasympathetic ganglia develop नहीं होते, तो वहाँ movement नहीं होती. Again, also associated with RET gene mutations. This gene on chromosome 10 RMQ11 is essential for neural crest cell migration. So if this is all affected, neural crest cell migration is affected, ganglia development is affected, and once ganglia development is affected, there is no movement of the colon and rectum, leading to Hirschsprung disease. So that's the cause for Hirschsprung. तो दोनों ही में आप देख रहे हैं autonomic nervous system के RET gene critical. So that's all about basically this chapter. What a long and interesting chapter, development of the nervous system, but beautiful design of your body. So all the very best. I hope you liked the video. If you did, please subscribe the channel, share the video with your colleagues, and stay tuned for upcoming videos. Take care till I see you next.